of permutation and combination. Okay, so this is the first one. So just take 2 minutes to solve this. The first one. It's similar to the one we had solved earlier. Repetition of word is not allowed. हो गया खुशबू? नो मैम अभी कर रहे। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? कितने वर्ड्स हैं? How many letters does it have? मैम 10। 10. And how many 10. different ways? I'm sorry How many different ways? ma'am, this should be written as 10 into 9 into 8, like so on to the 1. Siddharth, are you there? हाँ मैम, कर रहे हैं मैम। ये तो बहुत इजी है भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम 10 P3 इसमें परमुटेशन मेरे ख्याल से लगेगा। 3 क्यों लगेगा? 4 ना, 4 लगेगा ना, 4 letters word. हाँ मैम, मतलब 10 और P3 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। करेक्ट. C option 5040. 5040। Correct. So how many of you could not get it? Arpita, did you get it? Yes ma'am, I've got it. Very good. I'm happy. So you also got it. Thank you. और देवेश, राहुल, राहुल ने ज्वाइन ही नहीं किया. राहुल यादव, डिड यू गेट इट? आया आपको ये वाला? यस राहुल, ये तो सिंपल है काफी. 10 वर्ड्स है हमारे पास और हमको क्या करना है? उसको 4 में करना है. सो दिस विल सिंपली बी 10 फैक्टोरियल बाय 10 10 minus 4.
फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, तो बाकी No, कैंसिल हो ma'am. जाएगा। हाँ, नहीं आया। No, ma'am. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 फैक्टोरियल का यही मतलब हुआ, इंटू 6 एंड ऑल दैट। बट नीचे क्योंकि हमारा 6 फैक्टोरियल है तो वो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 विच इज 5040। 40. करेक्ट। Yes, ma'am. ओके, सो द नेक्स्ट वन। नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर्स लेना है फ्रॉम 3 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन। सो यू हैव 8 मैम people. क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन Ma'am, नहीं we दिख रहा। can't see the question on Okay, the screen. 1 minute. Can you see it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Okay. Okay, so a delegation of 5 members has to be formed with 3 ladies and 5 gentlemen. So you have 8 people altogether. Mhm. Mhm. And 2 particular ladies are always included in the delegation. Ma'am, 28 is the answer. इतना Ma'am, जल्दी? कैसे आया 28 आपका? खुशबू? Ma'am, 8C2 by 8C2. नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 8C2 तब होगा जब यू कैन इंक्लूड एनीवन ना, बट इसमें क्या हमारे पास चीज है कि वी हैव टू इंक्लूड 2 लेडीज ऑलवेज। यू हैव टू ऑलवेज इंक्लूड 2 लेडीज। ओके, Yes, ma'am. तो आपके पास सिर्फ 3 का चॉइस है। 3 का चॉइस है आउट ऑफ 6। 6 मतलब 2 तो हमेशा ही होना है, तो 1 लेडी एंड 6 जेंटलमैन एंड 5 जेंटलमैन, तो टोटल 6। और अभी आपको जो है 5 मेंबर्स है, तो आपको 2 तो इसमें से आई चाहे लेडीज होंगे ही, तो यू हैव टू चूज अनदर 6। तो इसमें आप 8 नहीं लोगे, यू विल टेक 6C3। So rather than taking 8, you will take 6C3. Ma'am, 20 is the answer if I will take 6C. Yeah, so 20 is the answer. Correct. 20 is the answer. सिद्धार्थ आपका आया? सिद्धार्थ? हाँ मैम, आया नहीं है मैम। 6 मैम क्यों लिए हैं मैम? नहीं सर, 6 हमने इसलिए लिया है कि हम लोग को 5 लोग लेने हैं, ठीक है, 8 में से। So that is one thing. But the second statement is 2 particular ladies are always included in the delegation. तो इसका मतलब है कि आपको जो है 5 मैम, चूज ही नहीं करने हैं, 3 ही चूज 3 करने में हैं। से 3 में से लेंगे ना 2 लेडीज। हाँ, 3 में से लेडीज 2 दिया हुआ है, ladies लेंगे। उसमें से 2 लेंगे। हाँ, ये तो आपको हमेशा ही लेना है, 2 particular ladies। एक 3C2 हो जाएगा, एक 3C3 हो जाएगा, मतलब। नहीं, उसमें आपको चॉइस ही नहीं है ना, 3C3 नहीं होगा क्योंकि आपको लेडीज का चॉइस ही नहीं है, लेडीज को आपको रखना ही है। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे चॉइस होगा 1 लेडी एंड 5 जेंटलमैन। हाँ, यस मैम। तो 2 लोग तो हमेशा ही है, तो इसमें से आपको कितने चूज करने हैं? 3 ही चूज करने हैं, क्योंकि 2 तो 2 पर्टिकुलर लेडीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन, वो अच्छा चॉइस हाँ ही मैम, नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है मैम। 6C3 होगा एंड द आंसर इज 20 विच इज करेक्ट।
ये तो बहुत सिंपल है, 6 डिजिट दिया हुआ है आपको, उसमें से आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ये तो बहुत इजी है, इजी नहीं है ये वाला? क्यों, कैन यू सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत सिंपल है। Ma'am, is the answer is 360? करेक्ट, Yes, ma'am. 360 is करेक्ट, करेक्ट, 360 इज आंसर। किसका नहीं आया? So Arpita and Khushbu have got their answers. Rahul and Devesh, आ गया मैम। आ गया? गुड। यस मैम। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का तो आ जाएगा। क्यों सिद्धार्थ? हाँ मैम। Okay. Okay. The next one is also very easy. ma'am. Factorial 8. हाँ, correct. Factorial 8. Right, right, right. So now you got the hang of it, huh? Good. Yes, ma'am. Factorial 8, correct. ये नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। तो कैसे करेंगे खुशबू ये वाला? खुशबू, Ma'am, हाँ, 18 P2 something. नहीं, यही पे ट्रिक है। 18 स्टेशंस बिटवीन हैदराबाद एंड बैंगलोर। बिटवीन का क्या मतलब है? हैदराबाद एंड बैंगलोर हैव नॉट बीन इंक्लूडेड। सो टोटल स्टेशंस कितने होंगे आप इफ यू इंक्लूड हैदराबाद एंड बैंगलोर? 20। 20, करेक्ट। तो क्या होगा? Ma'am, is it 380? It is 380, correct. 20 P2. So that the ticket has to be printed between 2 stations, and you have 20 stations. So simple formula is 20 P2, जिसका आंसर है 380. Ma'am, I have done something else. What have you done? I have done it like 20 into 20. That means there are 20 stations. So I just simply I did it orally. 20 into 20, that is 400. हाँ, And there are 20 stations. So I and excluded you the have one minus. which we are traveling from. So I just minus that and got this. I don't know if you'll get that correct answer every time by that logic. Yes, ma'am. I was thinking same thing, but this time it हो worked. गया मैम 380 है। Correct, correct. 380 है, correct. And next वाले का 120 है क्या? Alive. 1 minute क्या है next? 120, अरे बाप रे, अर्पिता तो एकदम ऑन फायर है। मैंने पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन है, अर्पिता इज ऑलरेडी सॉल्व बेटा। कितना है 120. नंबर? 120. 120. थोड़ा सा इश्यू है,
120 में तो अलाइव भी आ जाएगा ना, Hmm. 120 में तो अलाइव भी आ जाएगा. सो टोटल देयर आर 5 वर्ड्स ना, तो 5 का फैक्टोरियल होगा इसका आंसर. करेक्ट, 5 फैक्टोरियल. बट 5 फैक्टोरियल में अलाइव भी तो इंक्लूडेड है. सो न्यू वर्ड्स. 119 is it? So alive Yes, को exclude yes, कर दे तो correct. 119. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Okay. ये तो बहुत सिंपल है. देवेश, ये वाला हो पाया आपका अलाइव वाला? ये हमने देखा ना, नंबर ऑफ वर्ड्स का तो फैक्टोरियल निकालना है. तो 5 वर्ड्स है तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है. बट उस 5 वर्ड्स में इवन अलाइव वुड बी इंक्लूडेड. सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. 119 है मैम. हाँ, करेक्ट करेक्ट. खुशबू आया 119? Yes, ma'am. 119 again. अच्छा, बाकी Yes, ma'am, आ गया. विवेक आ गया? Yes, ma'am, 190. ओके ओके. So the next one. So 6 points are marked on a straight line and 5 points are marked on another line which is parallel to the first line. मैम क्वेश्चन ऊपर थोड़ा कर दिएगा. स्लाइड अच्छा, 1 minute. स्लाइड ऊपर थोड़ा कर. हाँ, अब दिख रहा है? हाँ मैम अब दिख रहा है. ओके, तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है? टोटल कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 6 points on the straight line and हाँ 11 points are there. 11 points है. Correct. And what is the next thing you'll have to see? तो 2 पॉइंट मिलाना है आपको. तो क्या इक्वेशन बनी आपकी? Ma'am, if the answer is 30, Hmm. The answer is 32. What is the logic you've used for 30? ma'am, like I was trying factorials and all, like Okay. what's factorial 6 and factorial 5. Yeah, you have to try factorials, but कौन सा फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल करना है आपको और कहाँ तक करना है? Ma'am, I was doing factorial 6. 6, yeah. Actually, you have to do 3 factorials. The first Hmm. is First you is have 6. 11 points. Huh? 11 points, and you have to join 2 of them. Yes, ma'am. Yeah. So 11C2 would be the first calculation. Hmm. However, you have the 6 points, Yes, ma'am. and 5 more points. So your equation will actually be
So by this you will get 30. 30, your answer is close to it, but I don't know what method you have used. So this is the equation. Oh, sorry. Anyone else? Arpita, मैम Siddharth? 55 मैम 11C2 को सॉल्व करने में 55 हाँ, पर माइनस भी तो है उसके अलावा। 11C तो आपने कर दिया। ये तो कर दिया आपने। 11C2 माइनस 6C2 माइनस 5C2, क्योंकि आप 11 को जोड़ नहीं रहे हो ना। व्हाट यू हैव टू डू इज 6 को 5 के साथ जोड़ना है, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक आउट। मैम 40 ऑप्शन में है क्या? 40, एक मिनट। हाँ, नहीं 40 तो नहीं है। ये अर्पिता का आंसर करेक्ट है, क्लोज टू करेक्ट है। मैम 30 आ रहा है। हाँ करेक्ट, 30 है। 30 इज आंसर। थिंक ओके, फ्यू मोर। सो ये वाला कर लो, पहले वाला ऊपर वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले ये वाला कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर ऊपर वाला करेंगे। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओके सॉरी। अब दिख रहा है क्वेश्चन। हाउ हाँ मेनी मैम। वर्ड्स कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड लीडर बी अरेंज। अब इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, फॉर्मूला सेम है बट इसमें 2 ई है, तो उसको आपको यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। बाकी तो इट इज द सेम जैसे हमने अभी अलाइव का किया था, इज द सेम, बट प्रॉब्लम मैम क्या है यहाँ पे। करेक्ट, कैसे निकाला 360? मैम फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। और वो क्यों लिया है, क्योंकि हमारे का रिपीटेशन हमारा ई जो है 2 बार आ रहा है। करेक्ट। अदर्स, डिड यू गेट द सेम थिंग? Yes, ma'am, I got it. ओके, हाँ मैम हो गया मैम 360। ठीक, यस मैम हो गया। गुड। देवेश, देवेश हुआ कि नहीं हुआ? देवेश कहाँ है? देवेश है ना? मैम Anyways, तो मैम नीचे हाँ, वाले का 20 आंसर है। नीचे वाले में 20 आंसर है। करेक्ट। कैसे? खुशबू, please elaborate this. 6C3 by doing this हाँ, 6C3 तो यहाँ पे लॉजिक आपको क्या लगाना है, ये हम पहले भी क्लास में देख चुके हैं। हाउ डू यू नो वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट? मैम डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा था ना, वी हैव रेड। लास्ट में मैम 5 आना लास्ट चाहिए। में 0 और 5 5 आना आना चाहिए। चाहिए। 0 5 या 0 आना चाहिए, तो अब 0 तो है मैं नहीं मतलब इस इसमें। क्वेश्चन में मैम 5 आना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास लास्ट डिजिट का एक ही ऑप्शन है। लास्ट डिजिट का आपके पास सिर्फ 5 ही ऑप्शन है। Yes, ma'am. ओके, सो यू हैव टू सो योर जो लास्ट डिजिट है वो आपका 5 होगा। सो देर आर ओनली you know one way of filling up the last one. तो अब अभी आपके पास चॉइस कैसे रह गई, कितनी रह गई? हेलो, कितनी चॉइस रह गई आपके पास, कितने नंबर रह गए? 5। 5 नंबर रह गए।
1 minute. Huh? So there is only one way of filling the 10 places. And how many ways you have for filling the rest two? लास्ट 10 मतलब 3 डिजिट है तो एक 100 में होगा, एक टेंस में, एक या एक यूनिट में होगा, एक टेंस में होगा और एक 100 में होगा। तो यूनिट का तो भरने का एक ही तरीका है, यू जस्ट हैव वन। नाउ तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स है, जस्ट अ मिनट। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 तो निकाल ही दिया क्योंकि 5 हैज टू बी ऑन इन द वंस प्लेस। तो इसको भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 नंबर है, राइट। और नेक्स्ट को भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 नंबर है, राइट। सो योर आंसर वुड बी 1 into 5 into 4 which is 20. तो खुशबू, एनी अदर लॉजिक यू हैव यूज्ड इन डूइंग दिस? दिस इज माय लॉजिक। आपने क्या यूज किया है? आपका भी आंसर 20 आया था ना? Yes, ma'am. What have you used? Ma'am, 6C3. Why doing this? Huh? Ma'am, 6C3. Total number 6. 6 is C3. Yes. Okay. Total number 6. And the 3-digit number have to find. हाँ, correct. Okay. Right. So 20 is the answer. Siddharth, did you get the same answer? हाँ मैम, आंसर तो आ गया, लेकिन हाँ मैम। क्या क्या डाउट है? मैम जो 3 डिजिट ले रहे हैं मैम, वो बस उसमें Okay. So we have done some permutation combination. Again, agar you will have to practice it to be able to know it better. But I think kuch tricks, so probably you would have learned, कुछ रिविजन तो हुआ होगा, और जिन्होंने पहले से किया है थोड़ा बहुत will be in a better position. So again, please go and do it again in case time permits. Sometime we can revise it again. तो अभी हमारा जो भी जितना भी एप्टीट्यूड का था, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे ना? जस्ट अ मिनट, आई विल ओपन द टॉपिक्स एंड सी। Probability is left. Okay. So next time when we are planning aptitude, probably we'll do probability. Ma'am, probability में भी तो यही होता है, permutation and Probability, combination. हाँ, permutation, combination, probability same चीज है, but specifically probability के questions I'll try to get. Okay, fine. So I think I got around 15 questions, so which you were able to solve in time. So let us move on to your domain again. So we were supposed to do investment planning, I think, in the next class, but we will start with it today. अभी भी अपने पास बहुत सारा time है. So we'll start with it today and probably tomorrow. कल का आपका क्या plan था? कल tomorrow was investment planning, no? So next time what we can do is we can talk about probability, क्योंकि basic formulas is the same and we have discussed it here. So we will do some probability questions. In the meantime, I'll prepare some questions. I'll work on some questions, and next session we will have probability. Ma'am, Friday. So anyway, Ma'am, Friday को mentorship session with mentor का मतलब? हाँ, so mentorship है, मतलब आपका interview type का होगा, आपको feedback देना होगा, मतलब I will give you, I don't know if I will be the one or somebody else would give you the feedback, because I have been giving you. तो अच्छा होगा कि कोई आप और आपसे बात करे और आपको feedback दे, that will be better. Yes, Ma'am, ma'am. I was saying the same be thing. Like we are so comfortable with you. So, वो comfort zone से बाहर नहीं आना हो पाता है.
So I would prefer that somebody else interacts with you, and a lot of time you because I interact with you so often that एक image आपकी मेरे दिमाग में बन गई है, तो हो सकता है वो image सही नहीं है, वो हो सकता है गलत हो, right? So if a third party which is like totally unbiased talks to you, will be able to give you better feedback. So I'll speak with Sakshi, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, but let us see, क्योंकि वैसे तो feedback I keep on giving you. मैम ये इंटरव्यू है क्या मैम? मैम मॉक टाइप में होगा। मेरे ख्याल से वही होगा। इंटरव्यू हाँ मैम, मतलब जैसे interview से हम लोग आप क्या कर रहे हैं? आप मॉक ली थी मैम, उसी तरह क्या? हाँ बेसिकली they'll tell you what to do. बेसिकली हम लोग का सबका ऑब्जेक्टिव तो सेम है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको प्रॉपर जॉब मिल जाए, आपका भी ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई थोड़ा सा देयर इज सम गैप नो बिटवीन यू योर स्टेटस एज ऑफ नाउ एंड द स्किल सेट व्हिच द कंपनी इज रिक्वायर। सो वही फीडबैक, वही गैप आपको फिल करना है, तो उसके ऊपर फीडबैक आपको मिलेगा कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आई थिंक इट विल बी अबाउट दैट। Anyways, so let us start with our next session, which is investment planning. Okay, so investment planning is a part of your financial planning where you also have to look at tax implementation of various instruments. So ये exercise हम पहले कर चुके हैं when we were looking at different kind of investments. तो हमने देखा था कि सब investment का अलग-अलग type का taxation होता है. So when we are planning investments for the customer, we also have to look at the taxation of instrument. Also, we have seen there are some instruments which offer us tax benefit. So we have to look at the tax benefit in case it is applicable. Then tax exempt investment schemes, withholding tax, wealth tax, और financial planning का एक purpose estate planning भी होता है. Estate planning is what will happen to the assets of the customer when he dies. So how we will do estate planning? What are the legal framework? Regulations are also very important for us to know because we have to work within the regulation of SEBI and RBI. What are the various things investment advisor needs to consider? Then AML, anti-money laundering, because money laundering is one of the biggest risks for the investment advisor or for the bank. So you have to minimize instances of AML, or they have to be zero. Then like the way we have to be KYC compliant when we are opening the account. Similarly, when we open the account, when we are advising the customer about investment, we have to do the KYC and risk profiling. Then there might be ethical dilemmas like, whether you should do something or not. So how do you behave when there is a conflict of interest between you and the customer? Then the various kind of investments. So most of it we have touched upon somewhere when we were trying to understand various kind of investments, but let's all consolidate it and put it in the picture. So if you see, जो अभी हम लोग पिछले from the time we have started your 4th semester, which is about wealth management, most of the things we have covered in the earlier session. It is only a kind of revision and maybe a little more detail to put it into perspective. Right? So पहले जैसे for example हमने कोई fixed income instrument देखा, then how do we suggest it to the customer is what we'll see in wealth management. So let us look at the tax
taxation of various instruments and the tax benefit which can be claimed for the customers. So you have to look at two sources of transaction taxation: income from investment and income from other sources. So I had told you, heads of income for calculation of income tax. Anybody remembers it? You remember how many heads of income we had seen for taxation? For income tax? Ma'am, just give me a minute. I'll be recalling. I cannot recall. Okay. Anyone else? Ma'am, देवेश? हाँ yes, ma'am. हाँ बताइए, कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं और क्या क्या होते हैं? Ma'am, एक dividend, distribution tax. अरे वो तो म्यूचुअल फंड का होता है। इंडिविजुअल इनकम में कितने हेड्स होते हैं? ओके, सो गिव यू, आई एम गिविंग यू हिंट, 5 हेड होते हैं। ये पांचों हेड क्या होते हैं वो आपको Ma'am, may बताना। I? May I? यस अर्पिता। Ma'am, income from salary, करेक्ट income from capital gain, करेक्ट income from dividend, करेक्ट। इनकम नॉट फ्रॉम, income इनकम फ्रॉम डिविडेंड नहीं होता है, Dividend तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपका Ma'am, डिविडेंड इनकम भी other sources, other, other thing, matlab income, then it will be income from house property. Yeah, yes, income from property, we can say. correct And correct, and then it comes to other sources. Matlab, yes if anything doesn't fit in all these criteria, then it comes to other yes sources. yes. So there are 5 heads of income. So I hope you can see it. Salary income, income from business or profession. This one was left, income from business. That was colliding with dividend. Yes. Then capital gains. ठीक है, तो ये है हमारे हेड्स ऑफ इनकम। मतलब हमारा जो भी हम पैसा कमाते हैं, दैट हैज टू बी इन वन ऑफ दीज थिंग्स। इसमें से एक ही तरह से आप पैसा कमा सकते हो। तो सैलरी, आप कहीं काम करते हो आपको सैलरी मिलती है, या आपका बिजनेस है जिससे आप पैसा कमाते हो, या कैपिटल गेन्स है, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर इनमें कुछ नहीं हो रहा है तो एक आपका रह जाता है, दिस इज अदर्स। तो अगर इन चारों में से किसी में भी नहीं आ रहा है, अगर इन चारों में से किसी में नहीं आ रहा है तो यू पुट इट इन अदर्स। सो फॉर एग्जांपल, डिविडेंड इनकम आपने जो बोला, वो डिविडेंड इनकम विल कम इन अदर्स। इंटरेस्ट ऑन एफडी वुड कम इन अदर्स। कौन बनेगा करोड़पति? वुड कम इन अदर्स, राइट? Yes, ma'am. इसी यही तरीके हैं पैसे कमाने के, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट नो वेयर द इनकम हैज टू गो। Just give me a moment. I think I've where is my file? Just give me a moment. I think I've closed it. Right?
So you can have tax income from investment और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सो इनकम में आपके दो टाइप के, इन्वेस्टमेंट से आपके दो टाइप के इनकम हो सकते हैं. क्या क्या है वो टाइप? इन्वेस्टमेंट से कितने टाइप के आपको इनकम हो सकता है? Ma'am, income from dividend and income from capital appreciation. हाँ, सो तो दो हेड्स में हो सकता है. अदर इनकम जिसमें आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस वगैरह जाएगा, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन कब होगा? ओनली व्हेन यू सेल दैट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो ये आपका डेफर्ड टैक्स हो सकता है, क्योंकि यू डोंट हैव टू पे द टैक्स इफ इट इज ओनली अ वैल्यूएशन गेन. यू हैव टू पे द टैक्स इफ इट इज अ realized gain. So I hope all of you remember this from mutual fund. We had seen, no, in a mutual fund you can have a valuation gain and a realized gain. What is the difference? Ma'am, valuation gain is theoretical, whereas Correct. Realize uh, when actually when assets actually we are get that sold. money. Yeah, Yes, when so actually we capital gain, sell yeah, that. correct. So capital gain would be payable only when you actually sell your asset. So so I'll explain to you the 5 heads of income, and anything which does not fall in 4 heads of income, and anything which does not fall under those heads has to be included in other source of income. So usually your investment interest and all that would be in the other source of income. So winning, investment, winning, others will come under the head others. Also, the taxation of investment income depends upon whether the income is classed as interest or dividend from a company or distribution from a mutual fund, because some of them are exempt. So for example, dividend income is exempt because dividend is out of the profit of the company, and the company has already paid a tax on the profit. Dividend is distribution of profit by the company to the investor, so ideally it should not be taxed. However, interest is taxable. So whether it is interest on your fixed deposit or interest from some other fixed income security, except for tax saving bonds. So we've seen there are tax saving bonds also, where the interest you earn is exempt of tax because they pay a little lesser rate of interest. So except for that, all interest will be taxable. So interest is taxable unless specifically exempted from income tax. It is taxable at the interest marginal rate of tax. So what does it mean? Anyone? What is the marginal tax of rate of interest? Okay. So what are the rates at which a person is taxed? What is the rate at which a person is taxed? No one? किस पे इनकम टैक्स लगता है? किस रेट पे लगता है? Ma'am, as described in the income IT slab for that year, no? IT slab. Ma'am, Correct. after 1.5 lakh. No. No, it's not about 1.5 lakh. That there will be a standard deduction according to the slab. We will talk about it. We'll talk about it. But the thing this with what I wanted to emphasize here is that there is no fixed rate of income tax. It depends on the person's income. So as of now, we have like 3 slabs. So 5%, 20%, and 30%. So more the income, more would be the income tax which you will have to pay. So basically, there is no fixed rate of tax. The tax is charged in different slabs depending on your income. Right? So for example, I am in the 5% slab. Okay, so I will have to pay only only 5%. But if somebody is at 20%, so a slab is decided on my total income. And now if my income is more, obviously I'll have to pay more tax. If my income is less, I'll have to pay lesser tax. Okay.
So for example, for my income between 2.5 lakhs to 5 lakhs, I have to pay interest at the rate of 5%. Then I think there is some change in that. Yeah. And then for say for 5 to 7%, 5 lakhs to 7.5 lakh, I have to pay 10% interest. Then income tax 7.5 to 10, I have to pay 15%. 10 to 12, we have to pay 20%. And so on and so forth. So what I will do is, in the next class, I will prepare a chart and get this. This way it will be difficult for you to remember. But what we have to remember as of now, the amount of tax I pay is not fixed. It will depend on my income. Okay, and they can be subject to tax deduction at source. So this here we have to understand two different things. One is taxability, the other is TDS. Taxability means that you have to pay a tax on that income, right? TDS would mean that the person, TDS means stands for tax deducted at source. So TDS for an interest would mean the person who is giving you this interest will give you this interest only after deducting tax. So let me give you an example. So you have a fixed deposit. In the fixed deposit, you are earning some interest. Now in fixed deposit, if your interest is more than 40,000, it is subject to TDS. That means you will have to, it is taxable and it is subject to TDS. So both are applicable. Taxable, that means you have to pay a tax. TDS would mean the person who's paying you this interest will deduct this tax. So the bank, for example, you have get an interest of 50,000. The bank, instead of giving you 50,000, will give you only 40,000 because 40,000 because the bank would deduct tax at the rate of 10%. Okay, so this is a TDS. Another example could be that you have, for example, kept money in your NSC. NSC, all of you remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What National is it? Saving Certificate. National Ma'am, National it Saving o- Certificate. Yes. it offers the 1.5 lakh tax deduction of Correct. total. Correct. Okay. So though it offers tax benefit, the interest on NSC is taxable. But this taxability doesn't apply, like they will not deduct TDS. That means the NSC, the post office will return you the entire money. But when you are filing income tax, you have to show it in your income tax and pay the tax if you fall in that limit. Okay, so that is the difference between taxability and TDS. TDS means that the person who is paying you the interest will deduct the TDS, and taxability means that you will have to pay the tax on this income. Okay, so you have to keep both in mind. Okay. Right, so interest rate, you have to usually pay tax on interest income. It is taxable at the investor's marginal rate of interest, may be subject to tax deduction. So the fixed income instruments we are talking about, the interest is taxable. However, it might be subject to TDS और नॉट TDS. मतलब आपको टैक्स देना है, टैक्सेबल है, टैक्स आपको देना है, पर जब आप इंटरेस्ट लेने जाओगे तो आपको इंटरेस्ट पे टैक्स कट के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज TDS. अगर कट के मिलेगा देन दैट इज TDS, अदरवाइज यू विल हैव टू फाइल योर रिटर्न्स एंड पे दैट टैक्स. थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे. मैम एक बार फिर से समझा दीजिए. So interest as an income, we know you generate on your fixed income products, right? ये पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है. अब फिक्स इनकम पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरी इनकम हुई,
और ये अदर्स में जाएगा, ठीक है। अब अदर्स में तो जाएगा, पर क्योंकि ये मेरी इनकम है, इसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सो इट इज टैक्सेबल एट द इन्वेस्टर मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टैक्स। सो मैंने जैसे आपको बताया कि हर कोई किसी को एक ही टाइप का टैक्स नहीं देना होता है। द टैक्स यू हैव टू पे वुड डिपेंड ऑन द टैक्स slab you fall in. So we will talk more about it tomorrow. Tomorrow I'll get the chart and tell you, because अभी financial year में कुछ change हुआ है, so I'll get the chart and tell you. The only thing which you have to understand is the difference between taxability and TDS. Taxability means that you have to pay a tax on it. So जो भी आपको इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर टैक्स पे करना है। कितना टैक्स पे करना है वो आपके इनकम स्लैब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दैट इज टैक्सेबिलिटी। इसमें से कुछ में टीडीएस एप्लीकेबल होगा। टीडीएस मतलब जब जो भी आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो आपको टैक्स डिडक्ट करके देगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एफडी में, अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं और आपका इंटरेस्ट जैसे 40,000 से ज्यादा है तो बैंक आपको टीडीएस काट के पैसा देता है। तो कई बार बिल भी वैसे पे होता है ना, टीडीएस काट के बिल पे होता है, राइट। और कभी कभी क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट, कुछ ऑप्शंस में आपको टैक्स अलग से पे करना पड़ता है। मतलब आपको पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा क्योंकि वो टैक्सेबल है, मतलब आपको टैक्स देना है। यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट सेपरेटली रादर देन द इशूअर डिडक्टिंग टीडीएस। अब समझ में आया टीडीएस का क्या मतलब? टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां पे वो इनकम हुई है वहीं से वो आपको नेट अमाउंट देते हैं, पूरा पैसा नहीं देते हैं, आपको टैक्स डिडक्ट करके देते हैं। और कई सिनारियों में आपको बिना टैक्स डिडक्ट किए मिल जाएगा, पर आप जब अपना टैक्स फाइल करेंगे तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं। सर्टेन इंडिविजुअल्स सच एज सीनियर सिटीजंस whose income is lower than exemption limit can apply to have interest paid gross that is without deduction of tax at source. So अभी I don't know if you guys will remember, पर हमने एफडी में फॉर्म 15G और 15H भी देखा था। These are like declaration. So I hope you remember फॉर्म 60, फॉर्म 61 भी हमने देखा था। किसी को याद है फॉर्म 60 और 61 हमने कहाँ पे देखा था? Yes, ma'am. कहाँ पे देखा था रिता? Ma'am, account opening के when we were learning the account opening procedure, there we saw form 60 and 61 that is given as a declaration when we are not having PAN card and we have applied. Correct, correct. So form 60, form 61 is a declaration from the customer saying that he doesn't have a PAN card and will provide it whenever he applies for it. So that is a declaration. So similarly, form 15H and form 15G are declaration by the customers that they are not income tax payee and no tax should be deducted on their income. Okay, so that is what it is, right? And 15G और 15H दो अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि 15G is for people below 60 and 15H is for people above 60. So for example, there is a senior citizen जिसकी सैलरी अब आती नहीं है क्योंकि रिटायर हो गया है, उसके पास his FDs are only source of income और उसका like 1 लाख FD का इंटरेस्ट आता है। तो बैंक क्या करेगा, उसको TDS डिडक्ट करके देगा। But in that case, what the customer can do is the customer can go and submit 15H with the bank saying that please do not deduct this TDS. तो TDS में exemption हो सकता है अगर आप 15G या 15H भरे। So 15G and 15H are forms which are used for preventing TDS. ये टैक्स की चोरी नहीं है। This is not tax evasion, right? This is just management of tax. So this I explained to you. Dividend distributed by Indian companies are exempted from income tax in the hand of the shareholders because anyways the profit it is a profit and the company has already paid the tax on the profit. The company would pay a dividend tax and therefore tax would not be paid by the shareholder. म्यूचुअल फंड में हमने देखा दो टाइप के टैक्सेशन होते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और
STT या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अगर इक्विटी में है तो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, और अगर आपका फिक्स्ड इनकम में है या डेट फंड में है देन then you will have to pay dividend distribution tax. Okay, so हमने देखा to to determine what kind of tax what kind of mutual fund it is, you have to see which is the main asset class. So 65% and more would mean it is a equity class, right? And if it is less than 65%, it would mean a debt mutual fund. So more than 65% equity. So this category is classified as equity fund. This fund is deemed to be receiving dividend that have already suffered CDT. CDT मतलब कंपनी ने जो डिविडेंड टैक्स भरा, ये वाला नहीं, यहाँ पे वो कंपनी डिविडेंड टैक्स ये भर चुकी है कंपनी, इसीलिए they don't have to pay dividend distribution tax and they have to pay security transaction tax. Okay. अगर less than 65 equity है, this category is classified as bond fund, and dividend distribution are also subject to dividend distribution tax. So this fund is required to deduct a dividend distribution tax before payment of the dividend at the rate of 25% for individuals and HUFs and 30% for others. तो ये भी एक टाइप का TDS हुआ, tax deducted at source, कि कंपनी जो म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड दे रहा है, it is net of the tax, मतलब उन्होंने पहले टैक्स काट लिया है, उसके बाद आपको डिविडेंड दे रहा है. और लिक्विड फंड में भी क्योंकि it is investment in fixed income security, so they also deduct a dividend distribution tax before payment, but a flat rate of 25% irrespective of tax status of the investor. Okay, so in with regards to income tax, there are some terminologies which we have to understand. Now, exemptions, deductions, rebate, इनका तीनों का अलग मतलब है. Exemption मतलब you don't have to pay any tax on it. That is exemption. Okay. For example, I am earning interest on my saving account. We also earn interest on my saving account, no? But it is exempt for payment of any tax till 10,000. तो 10,000 तक अगर मेरी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होगा, 10,000 के लिए पता नहीं कितना करोड़ों रुपए मुझे रखना पड़ेगा, बट 10 लाख तक अगर मेरा इंटरेस्ट होगा ऑन सेविंग अकाउंट, आई डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन दिस. ओके, सो दैट इज एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन मींस एग्जेम्प्ट, हटा दिया, उस पे टैक्स नहीं पे करना है. डिडक्शंस, डिडक्शंस हमने देखा सेक्शन 80C का हम डिडक्शन कहते हैं, एग्जेम्पशन नहीं कहते हैं. डिडक्शन मतलब वो हमारी सैलरी से माइनस हो जाता है. डिडक्ट मतलब हटा देना, टू माइनस इट. ओके, तो दैट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी. एंड rebate is paying a lower rate of tax. So these are three things which are totally different and are useful in planning tax for the customer. So tax exemptions, deductions, and rebates. So exemption means certain types of incomes are exempted from tax. That means you don't have to pay any tax, such as dividend from equity shares or equity mutual fund, which we just saw. And then deduction, the amount invested in eligible investments may be deducted from taxable income up to a maximum limit of 1,50,000 in a financial year, which is section 80C deduction, which we have seen. Then rebates, after income tax is calculated, the actual amount of tax payable may be reduced by the amount invested for other type of eligible investment. So these are three different things. So we have to, for when we are planning tax, we have to look where all can be claimed exemptions, where all can be claimed deductions, and where can we get rebate.
So 15H and 15G are for exemption. So I'm telling the bank not to deduct my TDS. Okay, so tax benefit. So when you are looking or choosing an investment option, you have to see what is the amount invested and what is the tax on the arising income. ठीक है, तो अगर आपने शेयर्स खरीदा तो आपकी इनकम कहाँ से आएगी? कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड. कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड. ओके, तो इसमें से कौन सी टैक्सेबल होगी? मैम कैपिटल गेन. Only capital gain, because dividend income, as we saw, is exempt. So how you don't have to pay any tax on amount invested, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टेबल सरप्लस है या उसके ऊपर आपने पहले ही टैक्स पे कर दिया है, तो उसके ऊपर आपको पे करना नहीं होगा. ओके, तो इसमें अगर आप देखो, सो द टैक्स स्टेटस हियर इज EET. EET मतलब जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो एग्जेम्प्ट है ऑफ एनी टैक्स. देन जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है. बट हाउएवर इन केस यू सेल योर शेयर्स, देन you might have to pay a capital gain tax. So EET would mean investment is exempt, income arising is exempt, however the redemption or the sale proceeds are taxable. So अगर आप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कंपेयर करोगे तो ज्यादातर का EET है. There is only one investment option जहां पे आपका EEE है. किसी को आइडिया है कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसपे आपका टैक्स का स्टेटस EEE है? एनीवेज आई विल टेल यू. PPF अगर आपने देखा हो, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उसमें जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं दैट इज आल्सो नॉट टैक्सेबल. The interest which you get is also not taxable, and when you withdraw that amount at maturity, that is also not taxable. Okay. So income tax is payable on any gain when asset is released. The goal is to encourage long-term saving by deferring tax until a later date. So ये आप tax planning का ये भी goal होता है. So there are different guidelines for foreign tax payments. So a resident of India receives dividend or other income from abroad and has paid tax in that country with which India does not have a tax treaty. Credit is available in India for such tax payment. India has entered into tax treaties with several partners country. Double tax avoidance agreement, which means कि अगर मैंने उस country में tax दे दिया है तो मुझे इंडिया में या तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा या कम परसेंटेज पे टैक्स देना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल्स लाइक कंट्रीज लाइक मॉरिशस एंड some other countries, India has signed a DTA, which is double tax avoidance agreement that enables citizens of each country to pay a lesser tax or no tax. So after the applicable tax treaty, the Indian resident paying taxes in other countries can claim a credit in India for foreign tax payment. तो ये हम सब देख चुके हैं. There are various schemes which come up for which allows banks to citizens to save tax. So in India, the governing body is CBDT, or Central Board of Direct Taxes, which governs the Department of Income Tax. And there are certain sections under which people can save tax. So section 80C तो हमने देखा है, right? Section 80C हमने देखा है, which is about investing in various kind of investment option to get exemption up to 1,50,000. Apart from that, you can use section 80 CCF, which offers benefit for the taxpayer who invest in government approved infrastructure bond. The maximum limit is about 20,000 in this. Then you have section 80C,
as section 80D, sorry, 80D is for health insurance. Okay. So if you buy health insurance, then you can have a annual deduction of 25,000. However, if you are also buying insurance for your parents, then you can claim more amount. So these are certain sections which you can look at for claiming tax deductions. Now, abhi kya hai ki you are, if you are going into wealth management and handling HNIs, you will be dealing with people जिनकी salary बहुत ज़्यादा है, like 12 लाख है या 20 लाख है. अब इनको they will look at ways of saving tax. नहीं तो बहुत ज़्यादा tax pay करना पड़ेगा. So these are some sections which we can take care for claiming deductions in our salary. So we have seen there are investments which offer you section 80C benefit. So public provident fund, ULIPs, fixed deposit, EPF, national savings certificate, even parents can claim tuition fees. Post office saving options, don't have many post office for 80C. Anyways, mutual funds, which kind of mutual funds offer you tax deduction? ELSS, Remember? ma'am, ELSS, ELS. equity link. ELSS, yes. Yes, correct. Then tax saving option in public sector bank and tax saving option in private sector bank. So there are many tax saving options which you can utilize for saving the tax. So now this is changed. The rate of return has also changed. Maximum contribution is as per section 80C, which is 1,50,000. What is the minimum? Anybody remembers? We've seen this PPF earlier. Ma'am, repeat question. Question is, what is the minimum for a PPF? Ma'am, 1.5 lakh. That is maximum. Minimum. Minimum is 500. Every year 500. What is the tenure? कितने टाइम के लिए रखना है Ma'am, PPF? 10 years. Max. कुछ भी नहीं याद है. 10 years का है. 15 years. Sorry. सॉरी नहीं, सब रिवाइज करो जो नोट बनाए हैं आपने पहले. ये सब हम पहले देख चुके हैं ना. I will revise. Revise your I will notes. revise. Yeah. So maximum contribution 1,50,000. Minimum contribution 500 rupees. Rate of return has reduced. It is somewhere around 7. I don't remember exactly कितना है. 7.1 है या 6.8 है. It is around 7. It is a retirement tool because it is for 15 years. So premature withdrawal. Ma'am, rate of return to 7.2%. 7.2. Okay. तो वही बोला मैं कि 7 के आसपास है. Now retirement tool क्यों है? क्योंकि 15 years का है. And you can also keep on increasing the maturity. और बीच में liquidity का भी option है. You can take a loan. You can withdraw also from the PPF. And probably it is one of the best option for investment because rate of return is relatively higher than fixed deposit. And it has the EEE option, which is exempt. That means the money you put in is exempt of any tax. The interest you earn is exempt from any tax. And the maturity amount is also exempt from any tax. So they in between, they have liquidity can be provided. So post 5 years of investment, withdrawal is possible. No taxes levied on the earned interest. So it is one of the long-term venture that does not allow complete withdrawal before 15 years. And this is offered by at a lot of places. You can buy it at post office. You can buy it at any of in the private sector banks. So very versatile. So does somebody remember what is ULIP? Yes, ma'am. ma'am. Unit linked investment plan means It is not Investment- investment plan, it is investment insurance and- plan. yes, investment plus insurance. It is a combination of insurance plus investment. Insurance part- and investment, correct. So a part of the premium you're paying is invested in the market, and therefore it is known as unit linked.
This product also provides you exemption and deduction under Section 80C. Maximum amount is 1,50,000. Okay, so ULIP is covered by Income Tax Act Section 80C. It is a unique blend of investment and insurance that gives a tax exemption. The premium which is being paid by a customer gets deducted with initial charges, while the rest of the amount is invested. So ULIP, because it is investing in the market like mutual fund, it can give you options of investing. You can choose to invest in either aggressive fund or balance fund or equity linked savings scheme. So aggressive, no, sorry, this is something else. Also aggressive ULIP, where you can invest 80 to 100% in equity, the rest is invested in debt instrument. ULIP, where individual can invest 80 to 40 to 60% in equities, conservative ULIP, which allow up to investment of 20% in equity. So just like mutual fund, you can decide where your investment has to be, whether you want to go aggressive by going overweight on equities, or you want to maintain a balance by having equal portion of equity and debt, or you want to take the conservative outlook where you do not want to take too much risk by investing in. Then you have equity linked savings scheme, which is a mutual fund which we have seen. This is a special mutual fund because this offers you Section 80C benefit, which is not offered by all mutual funds. Because it is offering a tax benefit, it also has a lock-in period. So if you look at most of your tax savings scheme will have a lock-in period. So equity linked savings scheme also has a lock-in period. So popularly known as ELSS, this is a kind of mutual fund that comes within income tax under Section 80C. Minimum investment period is 3 years. The interest rate depends on the performance of the scheme in the given year. If it does well, then it is more likely to increase even the interest rate on PPF. Obviously, market linked है, market prices को reflect करेगा. Then fixed deposits also can give you, there is a specific fixed deposit. So though we have seen bank offer fixed deposit with a maturity of 7 days to 10 years. For tax saving, the tenure of the deposit is exactly 5 years. Nothing more, nothing less. The FD has to be kept with the bank for 5 years. Maximum amount again under Section 80C is 1,50,000. So interest rate would be dependent on the prevailing interest rates. It cannot be in cash before 5 years. Also, like other FDs, you cannot take a loan on tax saving FDs, right? So I think I'll end the session here today. Tomorrow we will meet again, and let us see if we can do probability. We'll try to do probability and probably this as well. So 1 hour we can do probability, and then we can continue with investment plan. Okay. Okay, So ma'am. Siddharth has logged off. What is the problem? Siddharth is not there. What happened to him? Anyways. Ma'am, Fine. Siddharth is here. Well, showing. He is there. Okay. तो कौन गया? साथ अच्छा राहुल चला गया है. राहुल कुमार. Okay. Chalo, then we'll meet tomorrow. Same time. And try to join like 2-3 minutes before 10 so that we can start exactly at 10. Okay, ma'am. Okay. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice Thank you, ma'am.